Okay, so hello students. I hope all of you are doing perfectly well. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है आई होप एंड स्क्रीन भी ठीक से विजिबल है. जो भी बच्चों क्लास में ज्वाइन कर रहे हो एक बार मुझे बता दो कि इफ एवरीथिंग इज फाइन और नॉट. अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हम लोग क्लास शुरू कर सकते हैं आज का. अगर मैं ऑडिबल हूँ, if you all can see the screen properly, then we can initiate the class. देखो, मोस्टली आज की क्लास में हम लोग जो चीज पढ़ेंगे वो है anomalous effect. So let's just see what an anomalous effect is. Anomalous anomalous Zeeman effect. क्या है ये चीज? सर मोस्टली जब हम लोग देखे हैं ट्रांजिशंस होता है, जब सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होता है तो उसको हम लोग नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं. बेसिकली इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. बट यही ट्रांजिशंस जब तुम्हारे सिंगलेट टू सिंगलेट ना होके, मतलब मल्टीप्लिसिटी वन से वन में ट्रांजिशन ना होके, जब ट्रांजिशन मान लो डबलेट या ट्रिपलेट में हो रहा है, इन दैट केस तुम्हारा एनोमलस इफेक्ट दिखता है. So this effect is observed. This effect is observed for doublet to doublet, for doublet to doublet, triplet to triplet, and quartet to quartet transition. Transitions. Now here what we can say, let's talk about the magnetic interaction of an atomic dipole of moment mu j in the presence of an external magnetic field. The magnetic interaction of or magnetic interaction energy of an atomic magnet of moment of magnetic dipole moment mu j in presence of weak magnetic field, in presence of weak magnetic field, in presence of weak magnetic field, B is equals to B k cap is, जब मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा E is actually equals to minus mu j dot b, magnetic dipole moment into magnetic field. अब दिक्कत है कि तुम लोग म्यू जे को कैसे लिखते हो? नेगेटिव ऑफ म्यू जे इज योर नेगेटिव ऑफ जी जे इंटू ई बाई 2m.
J vector dot B. Now just because B is your BK cap, so it will be JZ. G into E by 2M. This can be written as GJ E by 2M JZ into B. JZ into B. It's a vector operator. This is its JZ into B. Now, that's basically the perturbation. That is my perturbation, HP. So if you know the perturbation, so first order correction will be equals to expectation value of the perturbation. That is actually equals to expectation value of this. So of course, for any particular state which is an eigenvector of this, we'll have so JZ, the eigenvalue will be MJ into H cut. So GJ E by 2M MJ into H cut into B. You see, EH cut by 2M is mu B, so GJ may be B into MJ. So it's GJ mu B B into MJ. GJ may be B into MJ. Done. Now I can give you some examples. So the splitting in presence of magnetic field will happen by this formula. If an energy level you have, the energy level will split according to this formula. Okay. So example of anomalous Zeeman effect. Zeeman effect. The example of anomalous Zeeman effect. How would you do that? Sir, first of all, let's come to example 1. So I'm considering the D1 line of sodium. I'm considering the D1 line of sodium, which arises due to the transition 2p half to 2s half. See, multiplicity is not 1, so it is the anomalous Zeeman effect. It's a doublet to doublet transition. So have a look. I have this energies. So one value is my initially in absence of the magnetic field. It was only this. That is my 2p half. 2p half. So when you apply the magnetic field, the state gets splitted according to the perturbation. So due to the splitting, just because now the energy eigenvalues has changed, in how many ways it will change? It will change for a particular value of J. Mj can have values from minus J to plus J. So for all values, I'll get an energy. So the splitting will happen according to the formula. Let me tell you. This is 2p half, so J is half. J is half, Mj can have plus half and minus half. So here your energy can be divided into two states. One is this. Another is this. It goes like this way. It goes like this way. Similarly, there is another state. Initially, there was a single energy.
But in presence of the magnetic field, this one also gets splitted into two levels. So one is this, another is this. One is this, another is this. Now, just tell me the values of mj. Just because we know that it's 2p half, so your j is half, mj can be equals to plus half and minus half. This is 2s half, j is plus half, mj can have values even I can tell you the energies here. That's a very important thing. I can tell you the energies here. So if I talk about energy, how can you write down the energy in presence of the magnetic field E, which is equal to E naught, the unperturbed energy, E0 plus the first order correction, plus the first order correction, E0 the unperturbed energy, plus the first order correction. Initially here the energy was E1, here the energy was E1, here initially the energy was E0. Initial energy for this state was E1, for this state was E0. Due to the perturbation, the energy will get shifted and it has now two energy values. One is, you just put the value of mj equals to half, so gj mu be b into mj. For this thing gj equals to, you have to find out for this atom, this state, gj you can find out is your 2 by 3. For this state, gj is your 2. So what is the value? Gj mu be b into mj. So for this case, it will be gj mu b b into mj is half. So this is cancelled. Mu be b by 3. Mu b into b divided by 3. So that is the correction. So the energy will become E1, the unperturbed energy, plus mu b into b divided by 3. For this case, it will be E1 minus mu b into b divided by 3. For this case, gj is your 2. So gj mu b b into mj. Gj mu b b into mj is your half, plus minus half. So it will be just plus mu b minus mu. So it will be just E0 plus mu b plus mu b into b. And this one will be E0 minus mu b into b. That's a very important thing which you can just take it down. Just give me a moment. So yes, for this state, you can find out gj mu b b into mj. So gj is equal to 2 by 3. So 2 by 3 mu b
B into the values of images are plus half and minus half. If you put plus half, you get mu b by 3. If you put minus half, you get minus mu b by 3. So the original energy plus correction for this term will be this, correction for this term will be this. Similarly for here, it is plus mu b minus mu b. That's all. Now, let me just tell you this. How the transition will occur. Now you have already got the energy values. I'm trying to tell you about the transitions. So I can have the transition corresponding to the selection rules, which are SE selection rule. That is delta mj has to be equal to 0 or plus minus 1. You can do it. So one transition I can show. So minus half to plus half, I can show a transition. One transition I can get from here. Then plus half to plus half, this transition I can get, which is 0, delta mj. Okay, plus half to minus half, I can have a transition. And minus half to minus half, another transition I can get. Minus half to minus half. Minus half to minus half. And plus half to minus half. These are 4 transitions which I can expect. This transition can be taken as 1. This transition can be taken as 2. This transition can be taken as 3. This transition can be taken as 4. Let's see all the transitions. So there are 4 main components which I can expect. Now, can you tell me what are the transitions? Can you tell me what are the transitions that you are getting from here? I can actually. That is, for the transition A, for the transition, let's say, if I don't say 1, 2, 3, 4, rather just say the transition A, B, C, D. Let's just write them as A, B, C, D. This is your A, this is your B, this is your C, this is your D. D. Now for the transition A, the energy, the 𝐒𝐔𝐿𝐺𝐿. For the transition A, the energy is equals to, what is it? You have to be very careful. So this is the first transition. The energy of this state is this. The energy of this state is this. So this minus this. So E1 minus E0, negative of 4 by 3 mu B into B. E1 minus E0, negative of 4 by 3 mu B into B. What I did, मैंने क्या किया, इससे इसको माइनस कर दो. इन दोनों में ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो इससे इसको माइनस कर दो. वेरी गुड. सिमिलरली फॉर द ट्रांजिशन B, the energy is equal to, for the transition similarly C के लिए energy, D के लिए energy, the energy is equal to, क्या क्या होगा एनर्जी, हम लोग थोड़ा सा देखना चाहेंगे. Okay, for the transition B, I can tell you the energy.
that is this minus this. If I do this minus this, what I'm going to get, this minus this is E1 plus mu b by 3, negative of E0 plus mu b into b. So E1 minus E0, E1 minus E0. If I do this minus this, क्या हो जाएगा भाई, mu b by 3. अच्छा, तो 1 by 3 minus 1, that is negative of 1 by 3 minus 1, तो negative of 2 by 3, तो minus 2 by 3 mu b into b. अगर मैं कहूं इस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी क्या होगा, ट्रांजिशन C, जहां पे तुम्हारा डेल्टा m 0 है, डेल्टा m जो 0 है, अगेन दिस माइनस दिस करना है, तो ये प्लस हो जाएगा बेसिकली. सो 1 minus 1 by 3, that is 2 by 3 plus 2 by 3. So E1 minus E0 plus 2 by 3 mu b into b. और एक चीज जो लास्ट वाला है यहाँ पे, this minus this, E1 minus E0, if you add this with this, you're gonna get 1 plus 1 by 3, that is 4 by 3. So it is E1 minus E0 plus 4 by 3 mu b into b. 4 by 3 mu b into b. So हम लोग को कुछ चीजें तो पता ही है, जैसे ये जो ट्रांजिशन है ये तुम्हारा है सिग्मा ट्रांजिशन, सिग्मा, ये है पाई, ये भी है पाई, ये भी है सिग्मा. तो सिग्मा पाई पाई सिग्मा ऐसे ट्रांजिशन आ रहे हैं. सिग्मा मतलब जब डेल्टा m 0 होता है तब उसे सिग्मा कहा जाता है, सॉरी पाई कहा जाता है. सिग्मा मतलब जब प्लस माइनस 1 होता है. तो जब ट्रांजिशन हो रहा है तो ओरिजिनल लाइन ट्रांजिशन में मिसिंग है, और बाकी के इसमें तुम लोग एनर्जी डिफरेंस देख सकते हो. सो जो तुम्हारे ट्रांजिशंस हैं, इन ट्रांजिशंस की वजह से जो एनर्जी एमिट होगा वो एनर्जी कितने हैं, ये सारे एनर्जीज हैं. तो ये सारे अगर एनर्जीज हैं तो इससे करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक लाइन, ये एक लाइन. ये एक लाइन, एक यहां से यहां तक होगा, एक यहां से यहां तक होगा. इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है, इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप भी वही है. तो एक यहां से यहां तक होगा, एक यहां से यहां तक होगा. और E1 माइनस E0 इज बेसिकली द ओरिजिनल लाइन जो मिसिंग है. यहां पे एग्जैक्टली इधर आता है द ओरिजिनल लाइन जो कि मिसिंग है. ये लाइन तुम्हें नहीं लिखेगा, सिग्मा पाई पाई सिग्मा, दिस इज द ओरिजिनल लाइन. original line, this is the original line, this green वाला जो तुम्हें पहले दिख रहा था. ट्रांजिशन पहले यहां से यहां पे हो रहा था ना, ट्रांजिशन पहले कैसे हो रहा था, ट्रांजिशन पहले यहां से यहां पे हो रहा था, बट मैग्नेटिक फील्ड देने के कारण ट्रांजिशन ऐसे हो रहा है. तो ये वाला लाइन तुम्हें नहीं दिखेंगे. So the original line E1 minus E0 is missing.
मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, द ओरिजिनल लाइन with energy E1 minus E0 is missing when you apply the magnetic field. The energy difference between first two lines is equal to energy difference between the last two lines. The energy difference between first two lines is equal to energy difference between last two lines. वो तुम लोग कैलकुलेशन से भी देख सकते हो, मैं अपना इसको ऑफ कर रहा हूं। तुम लोग देख सकते हो कि ये जो दो लाइन है इनके बीच का जो एनर्जी का गैप है, इन दोनों लाइन के बीच का भी एनर्जी का गैप सेम ही है। दैट्स ऑल। यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड भी है ये समझने के लिए कि कितना तुम्हारा ट्रांजिशन होगा। तो एक शॉर्टकट मेथड भी है कितना ट्रांजिशन होगा वो जानने के लिए। उसको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग कि जस्ट हैव अ लुक टू दिस मेथड। एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड क्या है वो? जस्ट ऐसे लिखो 2p½ और एक लिखो 2s½ 2p½ में क्या क्या है? mj, यहां पे mj वैल्यूज ½ -½ यहां पे भी ½ -½ कैसे आएंगे बेटा? एक ट्रांजिशन तो होगा यहां से यहां तक, एक ट्रांजिशन तेरा होगा यहां से यहां तक, -½ to -½ तो पाई ट्रांजिशन, ये भी पाई ट्रांजिशन जहां पे डेल्टा m 0 होता है। इस केस के लिए डेल्टा m इज योर +1, इस केस के लिए डेल्टा m इज योर -1। तो एक ट्रांजिशन ऐसा वाला आएगा यहां से यहां तक, एक ट्रांजिशन ऐसा वाला आएगा यहां से यहां तक। दिस वन के लिए डेल्टा m जो होता है +1, जो ऐसा ट्रांजिशन है उसके लिए डेल्टा m जो तुम्हारा होता है -1, और जो ये वाला सीधा वाला ट्रांजिशन है उसके लिए डेल्टा m जो होता है तेरा 0। तो टोटल कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम द D1 लाइन ऑफ सोडियम? टोटल 4 कंपोनेंट्स। Zeeman components, that's all। इसके बाद हम लोग D2 लाइन ऑफ सोडियम पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। D2 लाइन ऑफ सोडियम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। मैं बता देता हूं तब तुम लोग को समझ में आ जाएगा, इट्स नॉट दैट अ बिग डील। मैं बता देता हूं D2 लाइन ऑफ सोडियम में क्या है। दूसरा एग्जांपल जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, दैट इज
एग्जाम्पल 1 दैट इज D1 लाइन ऑफ सोडियम। हाँ, अब मैं बताने जा रहा हूं एग्जाम्पल 2 दैट इज D2 लाइन ऑफ सोडियम। जहां से तुम लिख सकते हो 2p3/2 से ट्रांजिशन हो रहा है 2s हाफ में। तो एक लाइन जो आएगा तुम्हारा दैट वुड बी बेसिकली 2p3/2। अब जब तुम्हारा स्टेट है ये वाला, ये एक लाइन है इन एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड डाला ये 4 लाइन में टूट जाएगा। एक तो ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा, यहां से भी ऐसे बना सकते हो, एक ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा। चार लाइन में टूट जाएगी। ये ऐसे दिखा सकते हैं। टोटल देयर विल बी 4 लाइंस और 2p3/2। ये जो लाइन है ना 2p3/2, सर 4 लाइन क्यों आए? क्योंकि जे तुम्हारा 3/2 है। तो सोच लो एम जे क्या क्या होगा और एनर्जी क्या क्या होगा। एम जे तुम्हारा हो सकता है 3/2, हाफ, -½ -3/2। करस्पॉन्डिंगली एनर्जी भी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो ये जो एस है ये लाइन कितने में टूटेगा? एक तुम्हारा 2 लाइन में टूटेगा कि एस तुम्हारा ये हाफ है तो जे हाफ है, तो एक जाएगा ऐसा, दूसरा जाएगा ऐसा। नाउ यू टेल प्लस हाफ आ रही है, माइनस हाफ आ रही है। ट्रांजिशन बता सकते हो ऑफकोर्स, ट्रांजिशन बताने इज नॉट अ बिग डील। 2s हाफ है ये, तो ये एनर्जी स्टेट E2 है। 2p हाफ को E1 लिया था तो ये E2 है, ये एनर्जी स्टेट E0 ही है। तो इनिशियली ट्रांजिशन ऐसा हो रहा था, यहां से यहां पे ट्रांजिशन हो रहा था इन एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक। इसके लिए तुम लैग्रेंज फैक्टर निकाल सकते हो, जस्ट हैंग ऑन। तो तुम्हारा J can be written as, just give me a moment, this can be written as 1.5, L equals to 1, S equals to half।
So it's 4/3. 4/3 इसके लिए जीजे आता है 4/3. इसके लिए if I write down, the value of GJ would come out to be as 4/3. Similarly, I can find out GJ for this as well. ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने निकाल के रखा था, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं. So for GJ for this will come out to be as 2. इसके लिए GJ 2 आएंगे. तो एनर्जीज क्या क्या होंगे बेटा? एनर्जीज क्या क्या होंगे तुम्हारे? सर जो पहला एनर्जी था E2 को लिख दीजिए अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, उसके साथ ऐड या माइनस होगा. तो एक सेकेंड रुक जाओ. जीजे म्यू बी बी इंटू एम जे, यहां पे पहली बार 3/2 है. 3 कैंसिल, 2 से हटूंगा 2 म्यू बी बी. नेक्स्ट टाइम जीजे है हाफ, मतलब 2 से हटूंगा तो 2/3 म्यू बी बी. नेक्स्ट टाइम जीजे है माइनस हाफ, तो माइनस 2/3 म्यू बी इंटू बी. उसके बाद जीजे है तुम्हारा -3/2, तो -2 म्यू बी इंटू बी. डन. तो ये हो गया. और यहां पे तुम्हारा आएगा E0. लास्ट टाइम जो लिखा था वही लिख दो. E0 प्लस में भी माइनस में भी. कितने लाइंस दिखेंगे भाई? सिलेक्शन रूल्स लगाओ. एक ट्रांजिशन होगा सर, आई कैन टेल, यहां से यहां तक. ये आपका एक ट्रांजिशन होगा. यहां से यहां तक और एक ट्रांजिशन होगा. यहां से यहां तक और एक ट्रांजिशन होगा. यहां से यहां तक और एक ट्रांजिशन होगा. अप से ये और एक ट्रांजिशन आएगा. और एक ट्रांजिशन जो लास्ट वाला होगा वो यहां से. टोटल 6 ट्रांजिशंस हैं. तो टोटल 6 कंपोनेंट्स आ रहे हैं. इन 6 कंपोनेंट्स के लिए तुम एनर्जी भी निकाल सकते हो. ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिशन ए, ट्रांजिशन ए, ट्रांजिशन बी, ट्रांजिशन सी, ट्रांजिशन डी, ट्रांजिशन ई, ट्रांजिशन एफ. These are all the transitions. And of course you can tell कौन सा पाई है कौन सा सिग्मा है. देखो -12 से ट्रांजिशन प्लस हाफ में जा रहा है तो सिग्मा. ये -3/2 से -12 तो सिग्मा. ये +12 से +12 तो पाई. ये -12 से -12 तो पाई. ये तुम्हारा 3/2 से हाफ तो सिग्मा. ये तुम्हारा हाफ से -12 मतलब सिग्मा. तो 2 पाई कंपोनेंट्स हैं और 4 सिग्मा कंपोनेंट्स हैं. तो शॉर्टकट मेथड से अगर इसका दिखाया जाए तो 2p 3/2 एक आएगा, एक होगा
2s हाफ 2p 3/2 के लिए तुम्हारा जो mj वैल्यूज हैं क्या क्या है, 2p हाफ के लिए mj वैल्यूज क्या क्या है। सर जी देखिए 3/2 के लिए वैल्यूज है आपका 3/2 हाफ माइनस हाफ माइनस 3/2 और इसके लिए वैल्यू है आपका प्लस हाफ माइनस। तो ऑफ कोर्स एक ट्रांजिशन ऐसा जाएगा, एक ट्रांजिशन यहां से यहां तक होगा, एक यहां से यहां तक होगा, अच्छा एक यहां से यहां तक होगा, एक यहां से यहां तक होगा और बेसिकली इन दोनों के बीच में एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा। 1 2 3 4 5 6 total 6 transitions will occur, 6 components। सिक्स कंपोनेंट्स। इसके अलावा तुम लोग के और एक चीजें आते हैं एग्जाम में, वो है पोलराइजेशन ऑफ द ज़ीमैन इफेक्ट, वो ही मैं थोड़ा बता देता हूं। पोलराइजेशन रूल, पोलराइजेशन रूल ऑफ ज़ीमैन इफेक्ट, ज़ीमैन इफेक्ट सबसे पहले है लॉन्गिट्यूडिनल व्यू, लॉन्गिट्यूडिनल व्यू जहां पे लिख सकते हैं व्हेन व्यूड पैरेलल टू बी, व्हेन व्यूड पैरेलल टू बी, पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इन दैट केस क्या क्या दिखता है सर, एक तो है transitions obeying delta m equals to plus minus 1, transitions obeying delta m j equal to plus minus 1 मतलब sigma components, give spectral lines with circular polarization, gives spectral lines with circular polarization, just an it's an information, take it as an information. Transition obeying delta mj is 0, that is pi components are missing. Transitions obeying delta mj equal to 0, that means the pi components are missing when viewed parallel to the magnetic field. But what happens if you see this thing perpendicular to the magnetic field, that is transverse view, TRANSVERAC, transverse view, what you will get, that is when viewed perpendicular to B, when viewed perpendicular to B, that's an important thing. So the first case comes, if you say perpendicular to B, so the sigma components give spectral lines with linear polarization, that means transitions obeying delta mj equal to plus minus 1 when sigma components, sigma components gives spectral lines with linear polarization, gives spectral lines with plane polarization or linear polarization, having plane of vibration perpendicular to the direction of B.
having plane of vibration perpendicular to B, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर में। एंड पाई कंपोनेंट्स का क्या हाल है? द पाई कंपोनेंट्स gives spectral lines with linear polarizations, gives spectral lines with linear polarization, दोनों ही linear होते हैं, with linear polarization, having plane of vibration parallel to D, having प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जस्ट एक सेकंड रुक जाओ, जो बच्चे देख नहीं पा रहे उनके लिए मैं ये वीडियो ऑफ कर देता हूँ। हैविंग प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पैरेलल टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ V। So in circular polarization, of course, you get to see sigma components are circularly polarized, pi components are missing. In transverse view, both sigma and pi components are linearly polarized, but yes, the plane of vibration is perpendicular to magnetic field for sigma, it's parallel to magnetic field for the pi. That's all. So this is all about your anomalism effect. This is all about your anomalism effect. चलो, थैंक यू वेरी मच। मैं क्लास आज का यहाँ तक ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में वी विल अगेन कंटिन्यू एंड आई विल जस्ट अपलोड दिस पीडीएफ इनटू माय टेलीग्राम चैनल, जो आप लोगों को पता है @सौरभ सर टेस्ट बुक। सो आप लोग वहां पे जाके ये पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वी विल सॉल्व।